Let us start the session. Today we are going to start session number 8 of chapter number 7 fraction. And in this session we are going to learn about addition and subtraction of unlike fractions. So let us start with the first topic, addition of unlike fraction. So let us take one example. अगर एक example लूँगा तो समझ में आएगा. So 1/6 and 1/3. See, the denominators are different. And if the denominators are different, that means these are unlike fractions. So what we will do, we have to convert it into like fraction. सबसे पहला step यही है. First we have to convert it into like fraction. So for that we have to find the LCM of the denominator. देखो 6 और 3 का LCM क्या होगा? 6 3 का मल्टीपल है, so 6 LCM होगा. और जिस नंबर का मल्टीपल होता है वो नंबर को HCF बोलते हैं. ओके हमेशा ऐसा नहीं आता, यहाँ पे आ गया है. सो एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स 3 and 6 is 6. So this is already 6 and we have to make it 3 to 6. So by which number we have to multiply? 2. Right. So 1 into 2, 3 into 2. So it will become 2 by 6. Right. So 1/6 plus 1/3, in place of 1/3 we will write 2/6. Right. अब दोनों like term हो गया, so we will add only numerator 1 plus 2 by 6. So that is 3/6. 3/6 को simplify करो. 1 by 2. Right. दोनों को 3 से divide करेंगे तो we'll get 1 by 2. So this is the final answer. Okay. थोड़ा से steps हम लोग देख लेते क्या क्या किए हैं. First we have to convert the fractions into like fractions. Okay, with the LCM of the denominators as the common denominator. This is the first step what we did in the example. Second, add the converted like fractions by adding their numerator and retaining the common denominator. And the last step, simplify the sum to the lowest term. हम लोग को 3/6 आया था, we got 3/6, then we simplify to its lowest term, that is 1/2. So these are the steps you have to keep in your mind. So let us move towards one more example. Find the sum of 2/3 plus 1/4. देखो इन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो क्या करेंगे, एलसीएम क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 3 into 4, 12. Okay, so now we have to make both the denominators 12. तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा? 4. Right. And 4 को किससे मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा? 3. Right. So first 2/3 we will multiply numerator and denominator by 4. So what we are going to get? 8/12. 8/12. Very good. And 1/4 we are going to multiply with 3, both numerator and denominator. So what we are going to get? 3/12. 3/12. Right. Very good. 3/12. Now we converted into like fractions. Now we have to add the numerators. ठीक है, दोनों के numerators को add करेंगे. So we are getting 8 plus 3/12. You can write directly also. Yes, you can write directly also 11/12. Now 11 और 12 में कोई भी common factor नहीं है, so this is the simplest form. Now one more example. ये दो fraction का sum था. अगर 3 होगा तो कैसे करेंगे, देखो. Find the sum of 2/9 plus 5/7 plus 13/3. तो ये डिनोमिनेटर्स का हम लोग को क्या करना है, एलसीएम निकालना है. देखो मैं एलसीएम निकाल के दिखला रहा हूँ. 9, 7, 3 बाय यूजिंग कॉमन डिवीजन मेथड. ठीक है. सो सबसे पहले 3 से डिवाइड करेंगे. 3 7 डिविजिबल नहीं है तो एज इट इज लिखेंगे. राइट. 1. अब देखो इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 3 into 3 into 7, that means 9 into 7, 63. So we got LCM 63. अभी सबका डिनोमिनेटर को 63 करना है. So let us start with the 9. 9 को किससे इंटू करने से 63 आएगा? 7. So ऊपर 7 से इंटू करेंगे तो we'll get 2 into 7, that is 14. Now come back to 7. By which number you have to multiply with 7 to get 63? 9. So 5 into 9. If you do 5 into 9, we'll get 45. Now coming to 3, by which number we have to multiply to get 63? 21. ठीक है. तो 21 into 13 into 21 करेंगे, that is 273. तो हम लोग को 2/9 के प्लेस में मिलेगा 14/9.
63. 5 by 7, 45 by 63, and 13 by 3 will get 273 by 63. Now we converted into like fraction. So now we have to add the denominators, numerators. 14 plus 45 plus 273. So 59 plus 273. So we got 332. 332 by 63. So क्या करेंगे इसको ऐसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आने से मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है. So 63 को 332 will divided by 63. So 63 into 5, 315. So 315 means 17 बचेगा. So we are getting 517 by 63. Okay, 517 by 63. This is the final answer. Any doubt in this question? No, sir. Okay. No, sir. Right. So addition का example हो गया. Now we are moving towards subtraction of unlike fraction. Same steps. What we did in addition, same steps we are going to do. Fractions with different denominators can be subtracted just as in addition. What we did, converting the fractions into equivalent fractions with the, that is like fractions with the LCM of the denominators as the common denominators. ठीक है, एक example देख लेते हैं. 2 by 3 minus 1 by 2. See, 3 and 2 both are different denominators, so they are unlike fraction. और ये दोनों में कोई भी common factor नहीं है. There is no common factor between 3 and 2. So LCM is very easy. 3 into 2 equal to 6. Very good. The LCM will be 6. Now for 3 denominator we have to multiply with 2 to get 6, and for 2 3. we have to 3. multiply with 3. Right. तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं. देखो, if you multiply with 2, 2, ये this will become 4. If you multiply with 3, 3, this will become 3. ठीक है. Now the denominators are same, so 4 minus 3. 4 minus 3 by 6. Right, very good. 1 by 6. So what steps we have followed? First, convert the fraction into like fractions. Second, subtract the numerator of the new smaller fraction from the numerator of the new greater fraction and retain the common denominator. And the third step, simplify the resulting fractions to its lowest term if needed, if required. Right? जैसे हम लोग को 11 by 12 मिला था इससे पहले एक एग्जांपल में, एडिशन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन. सो वहाँ पे हम लोग को जरूरत नहीं पड़ा था. वी हैव नॉट रिक्वायर्ड. ठीक है, तो उस समय छोड़ दोगे. नाउ लेट अस सी वन मोर एग्जांपल्स. ऐड 2 by 5 to 1 by 3. सो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 5 and 3? देयर इज नो कॉमन फैक्टर. 15. वेरी गुड. सो जब कॉमन फैक्टर नहीं रहता तो डायरेक्ट इनटू करना है. राइट. अभी देखो इसको डायरेक्ट कैसे करना है. फर्स्ट, by which number we have to multiply with 5 to get 15? 3. So ऊपर नीचे 3 से इंटू करोगे. और by which number we have to multiply with 3 to get 15? 5. So ऊपर नीचे हम लोग को 5 से इंटू करना पड़ेगा. तो ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट. Whether this step is clear? Yes, Yes, sir. sir. Okay, this will become 6 by 15 and this will become 5 by 15. Right. Now we converted into like fraction. So what we have to do? We have to add the numerators. 6 plus 5. So we can write directly. Without writing 6 plus 5 upon 15, we can write directly 11 by 15. This step is clear? Yes, sir. Yes, sir. Now there is no common factor, so simplification is not required. Right. Now we'll see one more example. 3 by 5 minus 7 by 20. See, 20 is a multiple of 5. So what is the LCM of 5 and 20? 20. 20. Very good. Okay. So ये already 20 है तो इसको कुछ किसी से इंटू करने की जरूरत नहीं है. Now by which number we have to multiply with 5 to get 20? 4. 4. So we have to multiply numerator and denominator by 4. So we'll get this step. So what we are going to get? 12 by 12 by 20. 20. Very good. 12 by 20. Now the common denominator. So we can subtract directly. That is 12 minus 7. 5 by 20. 5 by 20. Right. Up. Whether simplification is required? Yes, sir. 1 by Yes. 4. Very good. Because there is a common factor 5. So 5 ones are 5. 5 fours are 20. So we got 1 by 4.
Okay, so now we are going to move towards try this question. Add 2 by 5 and 3 by 7. So first we have to find the LCM of these two. So there is no common factor. What is LCM? 35. Yes, 5 into 7, that is 35. Now by which number we have to multiply with 5 to get 7. 35? Yes, 7. 7. So दोनों को 7 से इंटू करो. देखो मैं यहीं पे रफ कर रहा हूँ. So what we are going to get? 14 by 35. 14 by 35. Right, 14 by 35. Now by which number we have to multiply with 7 to get 35? 5. 5. 5. Right. So what we are going to get? 15 by 35. Very good. 15 by 35. Now we converted into like fraction. Now simply we have to add the numerator, right? 14 plus 15. So we are 29 getting, by 35. yes, 29 by 35. Very good. So first question is over. Now second question. Subtract 2 by 5 from 5 by 7. So from के बाद वाले को पहले लिखना है, right? Whatever the fraction is given after from, that we have to write first. So now what is the LCM of 5 and 7? Already we did 35. 35, right? So 5 को 7 से multiply करेंगे तो 35 आएगा. So we are going to multiply with 7. So same, we are getting 14 by 35. Now the second number, second fraction, we have to multiply with 5. So we are getting 25 by 35, right? 25 by 35. Now 25 by 35. just now I told you that which fraction we have to write first? 5 by 7. 25 by 35. Yes, 5 by 7, that is 25 by 35. So this step is clear, all of you? Yes, sir. Okay, now both are like fraction. Now we have to subtract the numerator. 25 minus 14 by 35. 11 by 35. 11 by 35. Right, very good. 11 by 35. Okay, so these are related with the addition subtraction of unlike fraction. अभी now we are moving toward addition of mixed fraction. Mixed fraction में हम लोग को कैसे ऐड करना है? तो फर्स्ट इसको दो तरीके से कर सकते हैं. जो सबसे इजी मेथड है वो मैं बता रहा हूँ. First you change the mixed fraction to improper fraction. Now after changing to the improper fraction, we have to go for normal process. See this example. So we are going to convert it into improper fraction. So 1 into 5 plus 2. 5. 7 by 5. 7 by 5. 7 by 5. Very good. 2 into 5 plus 1. 11 by 5. Right. Now both are like fraction. So simply we have to add the numerator. That is, 18 by 5. yes, 18 by 5. So after getting 18 by 5, we have to again convert back to mixed fraction. So 5 3s are 15 और 3 रिमाइंडर आ रहा है. So that means 3. एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो कैसे कन्वर्ट करते हैं हम लोग. 18 you have to divide it by 5, right? So we are getting quotient 3, right? 15 and remainder 3. So first we have to write quotient. देखो quotient remainder upon divisor. This is the formula. So 3 by 5. This is clear? Yes. 3 by 5. Okay, fine. We'll see one more example. 5 1 by 2 plus 7 2 by 3. ये like fraction था, ये unlike fraction है, ठीक है? So 5 into 2 plus 1. 11 by 2. Yes, 11 11 by by 2. 7 into 3 plus 2 by 3. 23 by 3. Very good. 23 by 3. 7 into 3 21 plus 2 23 by 3. Okay, now we have to find the LCM of these two because these two are unlike fraction. We have to convert it into like fraction. So 6. yes, very good. कोई common factor नहीं है, इसलिए 2 into 3 करेंगे 6. LCM of 2 and 3 is 6. So इसको 3 से इंटू करेंगे और इसको 2 से इंटू करेंगे ऊपर नीचे. So we are getting 33 upon 6 and 46 upon 6. Now both are like fractions, so we have to add the numerator. 33 plus 46. 36 plus 46 is 79. 79 by 6. अभी 79 by 6 को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखो, एक बार और रिवीजन हो जाएगा.
I'm going to convert it into mixed fraction. So 6, 1, 6, 1, 9. So 3 से जाएगा 18, and we are getting remainder 1. So first we have to write quotient, that is 13, and remainder by divisor, that is 1 by 6. So 13 1 by 6. This is clear? 13 1 by 6. Yes. ओके सो सेम हम लोग यही वाले स्टेप्स हम लोग किस में करेंगे, सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन में. चलो सब्ट्रैक्शन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन. द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग टू मिक्स्ड फ्रैक्शन इज सिमिलर टू दैट व्हाट वी डिड इन द एडिशन, राइट? सो लेट अस सी वन एग्जांपल. सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? What is the first step? Convert into improper fraction. Very good. Convert into improper fraction. Right, converting into improper fraction. So we are getting 4 into 5 plus 3. 23 by 5. 23 by 5, right? 3 into 23 by 5. 3 into 7, that is 21 plus 3 by 7. 24 by 7. 24 by 7. Right. 24 by Now 7. we will find the LCM of the denominator. So 35. there is no common factor, तो direct multiply करना है. So LCM of 5 and 7 is 35. 35. अब इन दोनों को 7 से इंटू करना पड़ेगा और इन दोनों को 5 से इंटू करना पड़ेगा. चलो 23 into 7 we are getting 161 by 35, and 24 into 5 120 by 35. So both are like fractions, so we have to subtract the numerator only. 161 minus 120 upon 35. 41 by 35. Right, 41 by 35. 41 by 35. So 41 by 35 को हम लोग को मिक्स्ड फ्रैक्शन में फिर कन्वर्ट करना है. So 31 1s are 35, फिर 41 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग को 6 मिलेगा. So 1 6 by 35. So this is the final answer. Okay, we'll see one example. तो ये तो सारे दो मिक्स्ड फ्रैक्शन के थे. So 3 मिक्स्ड फ्रैक्शंस के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. So we'll see this example. Add 2 1 by 2 plus 4 2 by 3 plus 1 3 by 4 and write the sum as a mixed fraction. जो final answer जो मिलेगा. Right. So first step, converting into improper fractions. चलो improper fractions में convert करते हैं. 2 into 2 plus 1 by 2. 5 by 2. 5 by 2, right. 4 into 3 12 plus 2 by 3. 14 by 3. 14 by 3. 1 into 4 plus 3 by 4. 7 by 4. Very good. So we got this step. Now we have to find the LCM of 2 3 4. ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ 2 3 4. जो बेस्ट मेथड है वो कॉमन डिवीजन मेथड है, राइट? पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 1 3 2. अब यहाँ पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सो 2 into 3 into 2 12. राइट. सो LCM of 2 3 4 is 12. सो 12 के लिए इन दोनों को 6 से इंटू करेंगे, इन दोनों को किससे इंटू करेंगे? 4. और इन दोनों को 3. राइट. चलो इंटू कर दिए. अब फर्स्ट फ्रैक्शन व्हाट वी आर गोइंग टू गेट, 30 by 12, 56 by 12, 21 by 12. Right. Now all are like fractions, so just we have to add the numerator. 30 plus 56, 86. 86 plus 21. 101. 86 plus 21, 107. 107 by 12. तो इसको कैसे करेंगे देखो, मैं मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ. 107 को 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? सो 12 8s are 96. 96. So remainder we are getting 11. So quotient remainder by divisor. So 8 11. 11 by 12. This is clear? Yes, sir. Right. So we'll see one more example. Simplify 2 4 by 5 minus 1 5 by 7. Okay. So first what we have to do, we have to convert mixed fraction into improper fraction. Then we will proceed as usual what we did in the previous questions. चलो convert करते हैं. 2 into 5 plus 4 by 5. 14 by 5. 14 by 14 by 5. 1 into 7. 7 plus 5 by 7. 12 by 7. Right. 12 by 7. Now there is no common factor in 5 and 7. So what is the LCM?
35. यस 35. सो इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 7. 7. इसको किससे इंटू करना पड़ेगा? 5. 5. वेरी गुड. सो इंटू कर दिए. सो ये मिलेगा 98 by 35 and this will be 60 by 35. So both are like fraction now. Now we have to subtract the numerator only. 98 minus 60, that is 38. So 38 by 35, right? So 35 ones are 35. यहाँ पे 3 remainder बचेगा. So we can write 1 3 by 35. This is clear? Yes, sir. Okay. So now we'll see a few more examples. Add 2 4 by 5 and 3 5 by 6. मैंने बताया था कि एक और मेथड है, उसमें होल नंबर को सेपरेट करके ऐड करके फिर इन प्रॉपर फ्रैक्शंस को ऐड करके निकालते हैं. तो उसमें मैंने देखा है व्हाट आई ऑब्जर्व दैट मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड विद दैट मेथड, क्योंकि जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन को ऐड करने से 1 से ज़्यादा आता है वहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं. सो बेटर यही वाला मेथड है, इजी. So first method what we have to do, we have to convert it in improper fraction. So 2 into 5 plus 4 by 5. 10 plus 4 by 5. 14 by 5. Very good. So 3 into 6 plus 5 by 6. 23 by 5. 23 by 6. 23 by 6, right. So first we got 14 by 5. Second we got 23 by 6. Now we have to add this two. ठीक है. और इसको हम लोग को वेट, हाँ राइट, एक मिनट. और 5 और 6 का एलसीएम है 30, क्योंकि कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है. सो इसको हम लोग 6 से इंटू करेंगे दोनों को, और इसको हम लोग 5 से इंटू करेंगे. सो विल गेट दिस स्टेप, राइट. सो 84 बाय 30, 115 by 30. Now the both are like fractions, so we have to add the numerators only. 84 plus 115 होगा 199. 199 by 30. So 199 by 30 को देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. 199 को हम लोग 30 से डिवाइड करेंगे. So 30 से डिवाइड करेंगे तो 6 से कैंसिल हो रहा है. 6 से पहले क्वोशंट 6 आएगा और रिमाइंडर यहाँ पे 19 आ रहा है. So 6 19 by 30. Right. Now we'll see one more example. Okay. Find 4 2 by 5 minus 2 1 by 5. So like fraction है ये, अगर इसको improper में convert करेंगे तो. So 4 into 5 plus 2 by 5. 22 by 5. Right. 22 by 5. 2 into 5 plus 1 by 5. 11 by 5. 11 by 5. Right. So first we got 22 by 5. Second we got 11 by 5. Right. And both are like fractions. So we have to just subtract the numerator. ठीक है. 22 minus 11 by 5. 11 by 5. Right. 11 by 5. 11 by 5. So 11 by 5 का ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है, देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन में. So 2 1 by 5 is the final answer. Otherwise you can divide and you can convert it into mixed fraction. Right. So we'll see one more example. Simplify 8 1 by 4 minus 2 5 by 6. So first we will convert it into improper fraction. 8 into 4 plus 1 by 4. 8 into 4 32 plus 1 by 4. 33 by 4. Right. 2 into 6 12 plus 5 by 6. 17 by 6. Right. 17 by 6. Now we have to subtract. But before that, what is the LCM of 4 and 6? देखो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ. 24. Wait. 24 नहीं है. डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है. देखो पहले 2 से डिवाइड करेंगे. 2 3. Now there is no common factor here. So 2 into 2 into 3. 12. 12. So LCM is 12. So ये दोनों को 3 से इंटू करना है, और ये दोनों को किससे इंटू करोगे? 2. 2 से. Right. So we got this step. So 99 by 12, 34 by 12. Next step. Now both are like fractions, so just we have to subtract the numerator. 99 minus 34, that is 65 by 12. अभी 65 को डिवाइड करेंगे 12 से. ध्यान से देखो मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ. So 12 5s are 60. Okay, so we are getting 5 remainder. So 5
5 by 12. So this is the answer. Okay, so now we are moving toward the last questions. इसके बाद assignment questions होगा. Let us start with the first question. 12 and 18 LCM we need to find. देखो LCM मैं right side में find कर रहा हूँ, ध्यान से देखो. 12, 18. So first we have to divide it by 2, 6 and 9. So both are multiple of 3. So I'm going to divide it by 3. So 2 and 3. So 2 into 3 into 2 into 3. 6 into 6. 36. 36. So LCM is 36, right? Now in order to make 36, 12, 36 we have to multiply 3. So ऊपर वाले को 3 से इंटू करना है, ठीक है, और 18 को हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर वाले को हम लोग को 2 से इंटू करना पड़ेगा 36 के लिए. तो मैंने बताया था इसको हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि दोनों का एलसीएम कॉमन एलसीएम यहाँ पे लिख लिए. उसके बाद इसको किस से इंटू करने से 36 आएगा, 3 से, तो ऊपर वाले को 3 से इंटू कर दिए. और 18 को 2 से इंटू करने से 36 आएगा, तो ऊपर 3 को 2 से इंटू कर दिए. दिस मेथड इज क्लियर. I already explained in the class also. Direct method. Okay. So we are getting 21 minus 6 by 36. 15 by 36. Yes, 15 by 36. और 15 जो है 5 से कैंसिल हो रहा है, सॉरी 3 से, और 36 भी 3 से कैंसिल हो रहा है. So if we cancel it, we are getting 5 by 12. 3 5s are 15, 3 12s are 36. So final answer is 5 by 12. Now the next question. 4 1 by 6 minus 3 2 by 9. So 4 into 6, that is 24 plus 1 by 6. 25 by 6. Right. 3 into 9, 27 plus 2 by 9. 29 by 9. 29 by 9. Right. पहले हम लोग कन्वर्ट कर लिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में. राइट. नाउ 6 और 9 का एलसीएम निकालना है. सो यहाँ पे साइड में निकाल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो. सो फर्स्ट वी हैव टू डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि दोनों में 3 कॉमन फैक्टर है. 2 3. So 3 into 2 into 3. 18. 18. So now see, LCM we got 18. Now by which number you have to multiply 6 to get 18? 3. So हम लोग जब कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे तो 25 को 3 से इंटू करेंगे, एंड 9 को किससे इंटू करने से 18 आएगा? 2. सो कॉमन डिनोमिनेटर लिखने के बाद 29 को 2 से इंटू करेंगे. ये स्टेप क्लियर है? Yes, sir. हाँ, क्योंकि हायर क्लासेस में हम लोग को ऐसे ही डायरेक्ट करना है, एक एक को फिर लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके नहीं करना है. सो उसमें बहुत टाइम लगेगा. सो दिस इज 75 एंड दिस इज 58. सो 75 माइनस 58 is 17. So final answer is 17 by 18. Okay, so this is the last question of today's session. So now we are moving towards assignment questions. इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन ज़्यादा है, क्योंकि लास्ट सेशन में मैंने एडिशन वाले क्वेश्चन ज़्यादा दिया था. राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन. थैंक यू वेरी मच.